Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 5 of the chapter Magnetic Effect of Electric Current. And this video is for class 10 students. Lecture number 4 I may discuss about the principle, construction and working of an electric motor. Today in this class we will discuss about a very important topic, a very important concept, and the topic name is electromagnetic induction. So students, NCERT बुक रे बहुत शॉर्टकट रे ए टॉपिक को फिनिश कर देछि, बट आमे बहुत डिटेल्स रे पढ़िबा, सब कांसेप्ट को भलसे आमे माने एनालाइज करिबा एंड एक्सप्लेन करिबा. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, ए जो चैप्टर नेम होछि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो आमे लेक्चर नंबर 1 रे आमे पढ़थिले जते बेले गोटे वायर रे किछि करंट फ्लो हुए, देन दैट करंट कैरिंग वायर produces a magnetic field. तो मु या कहि परिबी जे इलेक्ट्रिक करंट is a source of magnetic field. ता माने we can get magnetic field from electric current. So we know that we can get magnetic field from electric current. I may discuss the magnetic field due to a straight conductor, magnetic field due to a circular current carrying loop, magnetic field due to a solenoid, all these things. Tamane electric current can produce magnetic field. Now if I ask the reverse question, I will ask the reverse question. What is the question? Can we get electric current from magnetic field? The question is, can we get electric current from magnetic field? The answer is yes. Yes, we can get electric current from magnetic field. And this is the theme of this topic, electromagnetic induction. तो आमे ए टॉपिक रे पढ़िबा आमे मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके केमिति इलेक्ट्रिक करंट पाई परिबा. And this experiment was first done by Michael Faraday. So a topic ro so important experiment hochi Faraday experiment. So first we will discuss about Faraday's experiment. So listen carefully what I am saying. So first we will discuss about the Faraday's experiment, then we will discuss about what are the observation, and then we will discuss about the conclusion or the result. So Faraday experiment kon kala hitla, ame gote coil naba. This is a coil like a solenoid, and I will connect a galvanometer to the coil. Okay, so what is galvanometer? Galvanometer is a device which is used to detect current in a circuit. Ta mane jodi gote circuit re current flow hothbo, then we can know it by using galvanometer. So let me write here, what is galvanometer? Galvanometer is a device which can detect the flow of electric current in a circuit, the flow of electric current in a circuit. गोटे सर्किट रे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होची कि नाही, we can know it by using the galvanometer. So तुम देखि पारुथबो, there is a needle in the galvanometer. This arrow mark represents the needle of the galvanometer. ठीक अछि. So galvanometer रे एमती गोटे स्केल थाए, ठीक अछि, and this point is marked as 0. ठीक अछि. जेते बड़े सर्किट रे किछि करंट फ्लो होनी बा galvanometer देखि किछि करंट फ्लो होनी, then the needle will rest or will point along 0, will point towards 0. किंतु जेते बड़े galvanometer देखि किछि करंट फ्लो होबो, then this needle will deflect, and the deflection may be towards right or towards left. जेते बड़े किछि करंट फ्लो होथिबो, then the needle will be like this,
जो जीरो थिबो से जीरो को पॉइंट करथिबो बट व्हेन a current will flow through the galvanometer then the needle may deflect towards right or it may deflect towards left depending on the direction of current. जदि आम इमेजिन करवा सपोज आम एज्यूम करूचे जे गाल्वानोमीटर रे करंट फ्लो होची टुवर्ड्स राइट एमती करंट फ्लो होची देन सपोज द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट जदि करंट रो डायरेक्शन चेंज हो जिवो जदि करंट फ्लो होबो फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट एमती करंट फ्लो होबो देन the deflection of the needle will be towards left. Okay, so remember that the deflection of the galvanometer needle will change according to the change in direction of current. But when there is no current flowing in the circuit or in the galvanometer, then there will be no deflection in the galvanometer needle. Okay, ta mane jodi ame kichi deflection observe kariba then we can sure that there is some current flowing in the coil. Okay, so अबे देखो आमे जो फिगर ड्रॉ करिचे से फिगर रे कोन अछि गोटे सिंपल गोटे coil अछि गोटे solenoid अछि and we have connected a galvanometer to it. Okay, definitely एथरे कि current flow होबनी because there is no battery connected to it. आमे जानिचे जो पर्यंत पोटेंशियल डिफरेंस बा EMF नथिबो आमे करंट पाई परिबा नाही. ओके, सो ए सर्किट रे आमे किछि बैटरी यूज करने सिंपल गोटे solenoid neche and we have connected galvanometer, so there will be no current in this circuit. That's why the needle of the galvanometer will point towards zero. Okay, now आमे पे कोन करिबा we will bring a bar magnet. आमे गोटे bar magnet आनिबा and we know that the magnet has two poles. Suppose एटा होची magnet रो north pole and एटा होची magnet रो south pole. So initially this coil is at rest, coil move करुनी and we will bring a bar magnet. Suppose एटा होची गोटे bar magnet, this is the north pole of the bar magnet and this is the south pole. जदि मु एबे magnet को आने की रखिबी near the coil and again this magnet is at rest, then also there is no deflection observed in the galvanometer. Coil अच्छी रेस्ट रे magnet अच्छी रेस्ट रे then there will be no deflection in the galvanometer. ता माने कोन किछि करंट फ्लो होनी. अच्छा एबे मु कोन करिवि I will move the north pole of the magnet towards the coil. मु कोन करिवि ना magnet रो north pole को move करेबी towards the coil. ठीक अछि, तो जेते बेले मु north pole को coil आडो को move करेबी then I will see a deflection in the galvanometer. जेते बेले coil आउ magnet both rest थिले कहीं move कर नथले से टाइम रे there is no current in the coil by in the circuit. But as soon as I start moving the north pole of the magnet towards the coil, I will see a deflection in the galvanometer. And suppose imagine करबा assume करो जेते बेले north pole move करूची towards the coil, north pole move करूची towards the coil, suppose the needle deflects towards right एमती deflect कला. ओके, आमे assume करूचे तापर हम कोन करिवि ना एमती move करथली the north pole of the magnet towards the coil. एबे हम कोन करिवि I will move the north pole of the magnet away from the coil. ठीक अछि, तबे हम कोन करिवि magnet रो जो north pole अछि ताको नै जेबी away from the coil, coil रो दूर को नै जेबी. Again I will see a deflection in the galvanometer but in the opposite direction. जेते बेले मु magnet रो north pole को move करेली towards the coil, at that time suppose the needle deflects towards right को deflect कला. Now if I will take the north pole away from the coil रो दूर को नै जेबी, then also I will see a deflection but in opposite direction, ता माने towards left. North pole away from the coil, away from the coil. जदि मु बार मैग्नेट रो north pole को coil रो दूर को move करेबी, then I will see a deflection in the galvanometer but in the opposite direction in this way. Is that clear?
आम डिस्कस करवा कौन पाई डायरेक्शन चेंज होची बट फर्स्ट वी विल सी द ऑब्जर्वेशन ओके दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन फर्स्ट कौन था आम मैग्नेट रो नॉर्थ पोल को मूव करेले टुवर्ड्स द कॉइल we saw some deflection in the galvanometer and suppose assume that the deflection is towards right. Now if the north pole of the magnet is taken away from the coil ru dur ko jibo then kon hobo we will see a deflection but in the opposite direction suppose towards left. Okay now ebe mu kon karibi na magnet को reverse कर देबी लेफ्ट रहिबो साउथ पोल राइट रहिबो नॉर्थ पोल ठीक अछि तो मुझे कौन करी अगेन से सेम मैग्नेट ने भी बट को रिवर्स कर देबी सो दैट लेफ्ट रहिबो साउथ पोल राइट रहिबो नॉर्थ पोल नाउ आई विल टेक द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट आई विल टेक द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल ठीक अछि सो एबे हम कौन करी मैग्नेट रो जो साउथ पोल अछि आई विल टेक south pole of the magnet towards the coil. Again, I will see a deflection in the galvanometer. तो आम ये देखा galvanometer deflection केमिति आसीबो नॉर्थ पोल को आवे नेला बेले नॉर्थ पोल को आवे नेला बेले डिफ्लेक्शन जेमिति आसुथला जदि मु साउथ पोल को नेबी टुवर्ड्स द कॉइल वी विल गेट द सिमिलर डिफ्लेक्शन ता माने कोन आम लिखिचे जिते बळे आमे मैग्नेट रो नॉर्थ पोल को नबा अवे फ्रॉम द कॉइल से केस रे द डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट ता माने जदि मु मैग्नेट रो साउथ पोल को कॉइल टुवर्ड्स द कॉइल मूव करेबी आई विल सी द सिमिलर डिफ्लेक्शन सो लेट मी राइट हियर साउथ पोल टुवर्ड्स द कॉइल साउथ पोल टुवर्ड्स द कॉइल तो ए केस रे कोन हबो आई विल गेट ए डिफ्लेक्शन and the deflection will be towards left माने similar to the second case north pole को away नेले जेमिति पाइबे deflection if I take south pole towards the coil I will get the similar deflection is that clear now एबे कोन करिबा आमे magnet रो south pole को move करेबा away from the coil ठीक अछि I will move the south pole of the magnet away from the coil again I will see a deflection in the galvanometer and in this case the deflection will be similar to the first case ता माने north pole of the magnet को यदि मु मूव करिबे towards the coil जेमिति मु पाइबे deflection similarly मु पाइबे the same deflection when I will take south pole away from the coil south pole away from the coil this deflection will be similar to the first case माने towards right asibo deflection is that clear so mu first kon kali na I moved the north pole of the magnet towards coil away from coil then I moved the south pole of the magnet towards the coil and away from the coil mu kon dekhili na north pole towards move करले जेमिति हबो deflection साउथ पोल को away नेले सेमिति हबो deflection नॉर्थ पोल को अवे नेले जेमथि फॉर डिफ्लेक्शन साउथ पोल को टुवर्ड्स नेले सेमथि फॉर डिफ्लेक्शन ओके सो दीज आर द फोर इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दैट वी गेट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट देयर इज ए फिफ्थ एंड अनदर वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन जदि मु मैग्नेट को स्लोली मूव करेबी ओके जदि मैं करी ना मैग्नेट को स्लोली मूव करेबी टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल ताले कोन हबो द डिफ्लेक्शन विल बी स्मॉल सपोज एटा होची द स्केल ऑफ द galvanometer and this is the zero mark suppose initially the needle was pointing towards zero जदि मैं कोन करेबी मैग्नेट को मूव करेबी वेरी स्लोली तुमे टुवर्ड्स मूव करिबार otherwise you can move it away from the coil if I move the magnet slowly then कोन हबो the deflection will be small मु गोटे small amount रो deflection पाइबे ओके बहुत small amount रो deflection पाइबे किंतु जदि मु मैग्नेट को बहुत फास्ट मूव करेबी बहुत हाई स्पीड रे मूव करेबी देन कोन हबो the deflection will be large ठीक अछि यदि मु अधिक स्पीड रे मूव करेबी
then I will see a large deflection. Okay, if the magnet is moved fast, then the deflection is more. Okay, और जदि magnet को move करेबा slowly, then the deflection will be less. But if the magnet is moved fast, then the deflection is more. So these are the 5 important observations that we get from Faraday experiment. Okay, तो आमे पे discuss करिबा जे why the galvanometer deflects. जेते बेले galvanometer रे आमे किछि deflection observe करूचे, the deflection indicates some flow of current. काहे कि तमको मु आरंभ कहि छि जे galvanometer is a device which can detect flow of electric current in a circuit. जेते बेले गोटे सर्किट रे करंट फ्लो होबो, then the galvanometer will show deflection. So deflection अर्थ कोन, सर्किट रे किछि ना किछि करंट फ्लो होउची. तो आमे देखिबा कोन, जेते आमे मैग्नेट को मूव करोचे, ठीक अछि, तमे you can take the magnet towards the coil or away from the coil. But look at this circuit here. ए सर्किट रे किछि बैटरी नाही माने किछि वोल्टेज बा किछि पोटेंशियल डिफरेंस नाही, स्टिल आमे किछि ना किछि करंट पाउचे. तो करंट पाउचे माने किछि ना किछि वोल्टेज थिबो which is not visible to us. आमे देखि पारुने जे वोल्टेज कोडी अछि because आमे किछि बैटरी लगेने. So जदि तुम कहिबे जे by moving the magnet some voltage is produced in the coil, then तमे पचरिबो why does the voltage produce. ठीक अछि. So let's discuss about that. तो आमे कोन जानले ना, जदि आमे गोटे coil नबा and if we move a magnet towards the coil or away from the coil, we will see deflection, and the deflection will also change the direction according to the situations. Okay, and remember that if we keep the magnet fixed and move the coil towards or away from the magnet, आमे फर्स्ट कौन कले ना coil को fix रखिकी आमे magnet को move करेले and we saw deflection. But if you keep the magnet fixed and move the coil towards or away from the magnet, then also you will see deflection. तमे coil को fix रखिकी magnet को move कराओ, otherwise magnet को fix रखिकी coil को move कराओ, you will get the deflection in the galvanometer. तामे किसी ना किसी current flow होची. And remember that when both the coil and the magnet are at rest, then we will not see any kind of deflection. तामने मन रखता हो, there should be a motion, either magnet move करू किंबा coil move करू. When both of them are at rest, then there is no deflection in the galvanometer, means there is no current in the circuit. Is that clear? So आमे discuss करिबा what is the reason behind this deflection, means what is the reason behind the flow of current. यदि current flow होची किछि voltage अछि, से voltage कोड आसुची, how can we get electric current? By moving the magnet. And why does the direction change? जदि मैं north pole को move करूँ towards the coil, the deflection is towards right, and when I am moving north pole away from the coil, the deflection is towards left. ठीक है जी. So we'll discuss all the details about this experiment. So to understand this concept, now we'll discuss about a very important term, and the name of the term is magnetic flux. Magnetic flux. Okay, so magnetic flux the symbol कौन, phi b. ठीक है. So ए टॉपिक टा तमरो माने एनसीईआरटी बुक रे नहीं. So from the board exam point of view, तमरे magnetic flux किछि यूज आसीबनी, but to understand this concept you must know about this magnetic flux and about Faraday's law, Lenz's law, all these things. Okay, so magnetic flux or meaning कौन, it is defined as the number of magnetic field lines
the number of magnetic field lines passing perpendicularly through an area. ठीक है जी. Again I am repeating, magnetic flux रो मीनिंग कौन ना, magnetic flux आम बाहर करिबा थ्रू ए सरफेस. गोटे सरफेस रे केते अमाउंट रो magnetic flux अच्छी. So magnetic flux through a surface is defined as what? The number of magnetic field lines passing perpendicularly. Okay, this is very important term. Perpendicularly through an area or through that area. So हमें पढ़ीचे जे to study the nature of magnetic field we take the help of some imaginary lines known as the magnetic field lines. ठीक है जी. And we have also discussed about the different properties of the magnetic field lines. So गोटे एरिया देखी बा गोटे गिवन एरिया रे केते अमाउंट रो मैग्नेटिक फ्लक्स अछि हमें जानिबा केमती हमें देखिबा जे से गिवन एरिया रे केतेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करूछंती परपेंडिकुलरली. सपोज हमें एमती गोटे एरिया कंसीडर करिबा. दिस इज द एरिया. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज एबे देखो दिस इज अ डस्टर. ओके, सो ए डस्टर रे look at this area. This is a rectangle. तो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया केता हबो लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक अछि. तो सपोज इमेजिन करो जे ए रूम रे मैग्नेटिक फील्ड अछि आउ जदि मु ए डस्टर को रखिबी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन सम मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी लिंक्ड with this area. So how to define the magnetic flux and the number of magnetic field lines passing perpendicularly through the area. तो perpendicular meaning कौन ना, this is the surface. ठीक अछि. जदि magnetic field line एमती रहिबे. Look at this situation when the magnetic field lines are perpendicular. We know that magnetic field lines they are directed from north pole to south pole outside the magnet. So जदि magnetic field एमती एंट्री करिबे, okay, आमे कहिबा the magnetic field lines are entering perpendicularly through the surface. जदि field line एमती जिबे then they are not perpendicular. जदि magnetic field line एमती जिबे, look, okay, like this. So this is the surface and the magnetic field lines are perpendicular to the surface. So suppose this is the figure, okay, and we have a surface like this. And suppose imagine that this is the magnetic field lines. The magnetic field lines are passing perpendicularly through the surface. ठीक अछि. तो जेते अधिक फील्ड लाइन पास करिवे गोटे गिवन एरिया देकी यदि अधिक मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करिवे देन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मोर. ओके, तो मैं देखिबा एठी जे मैग्नेटिक फ्लक्स ता कहां पर डिपेंड करे आ तार फॉर्मूला कौन. तो एक्चुअली तार फॉर्मूला गोटे सिंपल फॉर्मूला मैं कहबी तमे क्लास 12 रे आहोरी भलसे पढ़िबो अबाउट दिस टॉपिक, बट क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू रो जति दरकार आई विल टेल दोज पॉइंट्स. तो देखो एठी मैग्नेटिक फ्लक्स ता डिपेंड करिवो कहा ऊपर. इट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. phi b means the magnetic flux. Magnetic flux is directly proportional to the magnetic field B and directly proportional to the area. ठीक अछि. So हमें देखिबा how does the magnetic field depend on the how does the magnetic flux varies with magnetic field and with area. Suppose imagine करो मो पाखरे गोटे given area अछि. ठीक अछि. I have a given area and suppose I have two regions. In one region I have a weak magnetic field. We know that in weak magnetic field कौन हबो, the magnetic field lines, the separation between the field lines is large. In the second region, this is region 1, it हउची region 1. Region 1 रे weak magnetic field अछि.
In region 2 we have strong magnetic field. Strong magnetic field means what? The separation between the magnetic field lines is less, or we can say that the magnetic field lines are close to each other like this. Okay, तो मुझे कौन करी से सेम एरिया को रखी रीजन 1 रे एंड रखी रीजन 2 रे. ओके, सो देखो ए सपोज आई विल कीप द एरिया that area in region 1 and I will keep the same area in region 2. देखो अभी कौन से what is the difference you can observe. हम देखि पारुचे जदि मु से गिवन एरिया को रखुची in the region 1, then only one field line is passing perpendicular through it. But if I keep the same area in the second region, this is region 2, region 2 এটা হচ্ছে strong magnetic field, strong B মানে কোন strong magnetic field, এটা হচ্ছে weak B মানে weak magnetic field. যদি মু গোটে given area নউছি and I am keeping that area in a region of weak magnetic field, তো কোন হচ্ছে না less number of magnetic field lines are passing through it, only one magnetic field line is passing through it. But if I am keeping the same area in the second region having a strong magnetic field, then you can see that 1, 2, 3 and 4 number of magnetic field lines are passing through that area. That means in a strong magnetic field what happens, more number of field lines pass through the area, but in a weak magnetic field region less number of magnetic field lines pass through the area. Is that clear? That means जदि magnetic field strong hela, then I will get more flux. Is that clear? Then we will discuss about the variation of the magnetic flux with area. ठीक है? Okay, so हमें कौन करिबा गोटे given magnetic field consider करिबा. Suppose this is the given magnetic field. Okay, एबे मैं कौन करिबी, I will consider two areas, गोटे आसीबो स्मॉल एरिया, गोटे आसीबो लार्ज एरिया. एबे देखो जदि मैं गोटे स्मॉल एरिया कंसीडर करूची, I am considering a small area. Okay, and in the same magnetic field I will keep a large area. Okay, in the same magnetic field मुझे कौन कली गोटे रखी small area and आगो रखी large area. Then what am I observing? In the small area you can see that only two magnetic field lines are passing perpendicularly through it. But in the same magnetic field, if I place a large area, then you can see that 1, 2, 3, 4 number of magnetic field lines are passing. ता माने यदि area अधिक होबो, then more and more number of magnetic field lines will pass through that area, and hence magnetic flux will be more. ता माने यदि area अधिक होबो, then magnetic flux कोन होबो अधिक होबो. Is that clear? So आमे कोन देखले ना the magnetic flux depends on magnetic field as well as area. But remember that the magnetic flux also depends on the angle between magnetic field and area, but that part is beyond your syllabus, सेति पई ताको मैं डिस्कस करूनी क्लास 12 रे तमे से विषय पढिबो. But for now remember that magnetic flux directly proportional to magnetic field and directly proportional to area. और magnetic flux रो गोटे सिंपल फॉर्मूला म कहूची, magnetic flux phi b is equal to b into a. ठीक है, magnetic field रो magnitude into area. Is that clear? Okay, ता माने जदि magnetic field बढ़िबो flux बढ़िबो, जदि area बढ़िबो then flux बढ़िबो. Okay, and if any one of them will decrease, then definitely flux will decrease. Okay, so magnetic flux रो meaning जानिबा परे आमे बे move करिबा to discuss about this observation. We got the 5 observations, so we'll discuss about all these observations. So आमे बे कोन डिस्कस करिबा जत्ते बे आमे गोटे मैग्नेट को मूव करूचे towards the coil or away from the coil, why are we getting some current?
ओके सो देखो सपोज एमती गोटे कॉइल अच्छी ओके गोटे सिंपल गोटे सिंगल टर्न कॉइल नौची एमती गोटे कॉइल अच्छी एंड दिस इज द मैग्नेट ओके एटा होची मैग्नेट रो नॉर्थ पोल एटा होची मैग्नेट रो साउथ पोल ओके तो जिते बड़े मु मैग्नेट को रखी रेस्ट रे एंड कॉइल भी कौन अच्छी रेस्ट अच्छी द कॉइल इज एट रेस्ट द मैग्नेट इज एट रेस्ट ताले कौन होची कॉइल आउ मैग्नेट भितरे जो डिस्टेंस टा दैट इज कांस्टेंट व्हेन कॉइल एंड द मैग्नेट आर एट रेस्ट both of them are at rest then the distance between the magnet and the coil is constant अच्छा जदि distance constant अच्छी ता माने कौन the magnetic field produced by this magnet at this point at this location is also constant ता माने ए मैग्नेटा गोटे गिवन डिस्टेंस रे गोटे गिवन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करूची ता माने ए कॉइल रे जो मैग्नेटिक फील्ड आसुची ड्यू टू दिस मैग्नेट दैट इज कांस्टेंट आउ आमे जो कॉइल नैचे से कॉइल रो एरिया भी कोन कांस्टेंट से चेंज होनी ताले एबे कोन हबो आमे देखुले मैग्नेटिक फ्लक्स 5b फॉर्मूला कोन b * a जदि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आ एरिया कांस्टेंट आमे जो कॉइल नैचे से कॉइल रो गोटे गिवन एरिया अछि गोटे कांस्टेंट एरिया अछि एरिया चेंज होनी एंड अगेन द मैग्नेटिक फील्ड भी कोन सेम कांस्टेंट अछि बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल इज कांस्टेंट जदि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट एंड एरिया कांस्टेंट देन मैग्नेटिक फ्लक्स कोन हबो कांस्टेंट हबो बट जदि मुझे कौन करी मैग्नेट को मूव करी ता माने आई विल टेक द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल सपोज इमेजिन करो मुझे कौन करी मैग्नेट को मूव करी टुवर्ड्स द कॉइल ठीक अच्छे तबे कौन हम डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट विल डिक्रीज मैग्नेट आउ कॉइल भितर जो डिस्टेंस अच्छी दैट डिस्टेंस विल डिक्रीज आम जाचे आमे मैग्नेट रो जेते पाखु को जीवा द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर जेते बड़े मैग्नेटा किछि दूर रे थिला देन द मैग्नेटिक फील्ड इज लेस एट दिस लोकेशन बट इफ आई टेक द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल डिक्रीजेस सो नाउ एबे कोन हबो द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन विल इंक्रीज जदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी गला तले कौन हम फ्लक्स बढ़ एरिया चेंज होनी बिकॉज आम जो कॉइल नहीं से कॉइल एरिया फिक्स अच्छी किंतु मैग्नेटिक फील्ड बढ़ुची कहीं आई हैव टेकन द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल इज दैट क्लियर ओके नाउ इफ आई टेक द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल जदि मुझे कौन करी ना मैग्नेट को नहीं जीवी अवे फ्रॉम द कॉइल एठी नहीं आसबी तबे कौन हम the distance between the magnet and the coil will increase जदि डिस्टेंस बढ़ी जीवो ताले कौन हम आम जाचे आम गोटे मैग्नेट रु जेते दूर को जीवा द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज सो व्हेन द मैग्नेट इज टेकन अवे फ्रॉम द कॉइल देन कौन हम मैग्नेटिक फील्ड विल रिड्यूस विल डिक्रीज जदि मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हम डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हम yes or no okay so हमें कौन लिख ले as long as the coil and the magnet are at rest there is no change in magnetic flux change हो नहीं but when either the coil is moved towards or away from magnet or the magnet is moved towards or away from the coil either तमें coil को move कराओ towards the magnet or away from the magnet किंबा मैग्नेट को मूव कराओ टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल यू विल सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस जदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़िबो देन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़िबो एंड जदि मैग्नेटिक फील्ड कमिबो देन फ्लक्स कमिबो त माने वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय मूविंग द मैग्नेट सो लेट मी राइट हियर बाय मूविंग द मैग्नेट we can change the magnetic flux linked with the coil
ओके ता माने मैग्नेट को मूव करे कि मु कोन करि परिबी कॉइल रे जो मैग्नेटिक फ्लक्स अछि ताको मु चेंज करि परिबी आइदर ताको इंक्रीज करि परिबी किबा ताको डिक्रीज करि परिबी and this change in magnetic flux will produce an EMF, will produce a voltage in the coil. This change in magnetic flux induces an EMF. What is EMF? EMF means electromotive force. So voltage and EMF, they are similar type of quantities, ठीक है जी, but there is some difference and आमे class 12 रे पढ़िबा what is the difference between potential difference and EMF. But for now remember that EMF is also measured in terms of volt, ठीक है जी. potential difference मेजर करिया volt रे, similarly electromotive force by EMF को मेजर करिबा volt रे, ठीक है जी. So this change in magnetic flux induces an EMF in the coil, ठीक है जी. So what is the meaning of induces? आमे जो लिखे जे electromagnetic induction. So induction word रो meaning कोन आमे कोन देखले ना जदी आमे गोटे coil रे गोटे बैटरी लगेबा then I have to connect the two ends of the coil to the two poles of the battery. बैटरी गोटे पॉजिटिव पोल थी गोटे नेगेटिव पोल थी आम कौन करवा से कॉइल रो दुईटा एंड को जॉइन करवा बैटरी रो दुईटा पोल रे. देयर इज सम फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बैटरी एंड द कॉइल. ओके बट एठी कोन होची कॉइल रे किछि बैटरी लागि नाही. देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड टू द कॉइल किंतु बाय सिंपली मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल आई एम एबल टू इंड्यूस सम EMF, some voltage. And there is no physical contact between the magnet and the coil. Magnet टा coil को touch करूनी. There is no physical contact between the magnet and the coil. Without any physical contact, some EMF is developed. Okay, some voltage is developed in the coil. That is known as induction. ता माने without any physical contact, we are able to develop some voltage. So remember that electromagnetic induction रे आमे जो वोल्टेज पाउचे आमे जो EMF पाउचे दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड EMF, एंड इंड्यूस्ड EMF रो बेसिक रीजन कोन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है जो पर्यंत मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हेनी वी विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ इंड्यूस्ड EMF and this change in magnetic flux is responsible for the induction of EMF and to get some current. जदि आदरे EMF induce हो then some current will flow through it. So हमें कौन लिखले एठी हमें जानी पाले जे जदि हमें गोटे मैग्नेट को मूव करोचे कीपिंग द कॉइल फिक्स्ड or we are moving the coil keeping the magnet fixed, then there is some change in magnetic flux and the change in magnetic flux is responsible for the induced EMF and hence we get some induced current, and so that the galvanometer deflects. Is that clear? Okay, now look at the last observation. कौन लिखा है? If the magnet is moved fast then the deflection is more. तब मैंने जदि में मैग्नेट को slowly मूव करेबा then there will be less deflection. Less deflection or meaning कौन? Small amount of current is flowing in the circuit. ठीक है जी? And large deflection means a large amount of current is flowing in the circuit. So जदि में मैग्नेट को slowly मूव करेबा then हमें small amount of current पाउचे. That's why the deflection in the galvanometer is less. But if we move the magnet rapidly or very fast, then there will be a large deflection. ता माने हमें large amount of current पाउचे. What is the reason behind that? So first Faraday experiment करथिले से एक्सपेरिमेंट रो से हमको या कहले जे जो पर्यंत गोटे कॉइल रे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हेनी आमे किछि इंड्यूस्ड करंट बा इंड्यूस्ड EMF पाइबा नाही. So change in magnetic flux is responsible for the induced EMF and induced current. ठीक है जी? And he could explain the reason behind this observation. जदि में मैग्नेट को मूव करेबा रैपिडली
will get large deflection, means more current. If we move the magnet slowly, we will get less deflection, means less current. So what is the reason behind that? What is the reason of this observation? Okay, so simple जिनस देखा सिंपल कॉन्सेप्ट. सपोज इमेजिन कर जे आमे गोटे कॉइल नहींचे, से कॉइल रो एरिया केते, एरिया होच ए. इज दैट क्लियर? द एरिया ऑफ द कॉइल इज ए. तो मुझे कौन करी ना, सपोज इनिशियली मैग्नेट रो नॉर्थ पोलटा 8 थिला एंड दिस इज द साउथ पोल, एंड सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द कॉइल इज सपोज हम कहबी 50 सेंटीमीटर. ओके, तमाने इनिशियली बार मैग्नेट रो नॉर्थ पोलटा एक कॉइल ठारू 50 सेंटीमीटर दूर थिला. And suppose when the magnet is placed here, the magnetic field at this location is B1. ठीक है, जिते बड़े मैग्नेटा यही जगह थिला, at that time suppose the magnetic field at the coil at this location is B1. So initial magnetic flux केते आसीबो, ताकि लिखी phi1 कौन ना इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, सेटा केते हबो ना B1 into A कौन, A होची एरिया ऑफ द कॉइल. एंड आम एज्यूम करिचे जते बड़े मैग्नेटा 8 थिला, माने कॉइल आउ नॉर्थ पोल भितर डिस्टेंस जेते 50 सेंटीमीटर थिला, सेही टाइम रे ए लोकेशन रे मैग्नेटिक फील्ड केतला B1 थिला. सो B1 A कौन हबो, मैग्नेटिक फ्लक्स हे जिवो. अच्छा, नाउ आई विल मूव द मैग्नेट स्लोली. ठीक है, एंड फाइनली आई विल टेक द नॉर्थ पोल टू दिस पॉइंट. ठीक है, एटा होची इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैग्नेट, एटा होची फाइनल पोजीशन ऑफ द मैग्नेट. एबे कौन हबो, सपोज नॉर्थ पोल आउ कॉइल भितरे डिस्टेंस केते अछि 10 सेंटीमीटर. ओके, तबे कौन होची ता माने मैग्नेटा कॉइल पाखु आसी हिची, एंड सपोज व्हेन द मैग्नेट इज एट दिस लोकेशन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉइल इज B2. ठीक है, तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स केते हबो, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स तक लिखी phi2 देखते हबो B2A हबो. डेफिनेटली B2 इज मोर देन B1. कहीं ना मैग्नेट पाखु आसले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी जीवो. यदि B2 हबो B1 रो मोर, देन डेफिनेटली phi2 विल बी मोर देन phi1. ता माने व्हेन आई एम मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग. ओके, तबे देखो मैग्नेटा केते डिस्टेंस ट्रैवल करूची. इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द कॉइल was 50 centimeter, and finally the distance is 10 centimeter. So distance covered kete, distance covered is equal to 50 centimeter minus 10 centimeter is equal to 40 centimeter. तमने नॉर्थ पोलटा 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करिछि. इज दैट क्लियर? ओके, तो ए केस रे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स केते आसीबो, phi2 minus phi1. फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, एटा केते हबो B2A minus B1A. इज दैट क्लियर? आके लिखि परिबी B2 minus B1 whole into A. ओके, ठीक अछि. सो जदि मु एबे कोन करबी, मैग्नेट को स्लोली मूव करेबी, देन मैग्नेटिक फ्लक्स जेतिके चेंज होबो. जदि मु मैग्नेट को रैपिडली बा फास्ट मूव करेबी, देन द चेंज इन फ्लक्स सेम आसीबो. काहे कि ना इनिशियली मैग्नेट 8 ला एंड फाइनली मैग्नेट 8 होची. आमे यदि फास्ट मूव करेबा तो कोन हबो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ता जहा थिला से सेम आसीबो. जदि हम स्लो मूव करूची कि फास्ट मूव करूची, देन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सेम रहिबो. काहे कि ना इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मैग्नेट इज गिवन. ठीक अछि, किंतु जदि मु
सपोज इमेजिन कर सपोज मुझे कौन करी ना फास्ट मैग्नेट को गोटे स्लोली मूव करी लेस स्पीड रे मूव करी फॉर एग्जांपल सपोज मो मैग्नेट को मूव करी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड रे मूव करी ठीक है जदि मो मैग्नेट को 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड रे मूव करी देन 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करिया पई केते टाइम लगे मैग्नेट को इट विल टेक 20 सेकेंड जदि गोटे सेकेंड रे मैग्नेट मूव करिवो 2 सेंटीमीटर देन 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करिया पई 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करिया पई मैग्नेट विल टेक 20 सेकेंड ऑफ टाइम किंतु जदि मु मैग्नेट को स्पीड रे मूव करेबी रैपिडली मूव करेबी फास्ट मूव करेबी तले कोन हबो सपोज इमेजिन करो मु मैग्नेट को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड रे मूव करूची देन ता अर्थ कोन गोटे सेकेंड रे मैग्नेट मूव करिवो 5 सेंटीमीटर ता माने इट विल टेक 8 सेकेंड टाइम इट विल टेक 8 सेकेंड्स ऑफ टाइम टू कवर 40 सेंटीमीटर से सेम डिस्टेंस को कवर करिया पई मैग्नेट कम टाइम नबो इन द सेकेंड केस ता माने जदि स्पीड बढ़ी जाउची तले कोन होची द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस इज लेस इज रिड्यूस्ड अच्छा किंतु चेंज इन फ्लक्स टा सेम होची सो रिमेंबर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट or the magnitude of the induced EMF does not depend on the change in magnetic flux. Change in magnetic flux upare depend karibo nahi what is the magnitude of induced current or induced EMF. तो कहाँ पर depend करिबो? Depend करिबो on the rate of change of magnetic flux. So remember that induced EMF कहाँ पर depend करिबो? Induced EMF and current depends on what? Rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. तारा meaning कौन? Rate of change of magnetic flux meaning कौन? ना change in magnetic flux by time. Change in magnetic flux divided by time ठीक अच्छे तो आम ये कौन देखले जदि आम मैग्नेट को मूव करोचे फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन दिस इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स B2 माइनस B1 होल इनटू A किंतु जदि मो मैग्नेट को मूव करेबी एट ए लेस स्पीड देन इट विल टेक मोर टाइम तो फास्ट केस रे जेतेले मो गोटे कम स्पीड रे मूव करोची तो सही केस रे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स केते आसीबो ना B2 माइनस B1 इंटू A डिवाइडेड बाय 20 कहीं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला कौन ना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय टाइम सो चेंज इन फ्लक्स केते दिस मच एंड इन द फर्स्ट केस जदि मो मैग्नेट को स्लोली मूव करोची तो केते टाइम लागुची 20 सेकेंड सो बाय 20 करिवे बट द सेकेंड केस कौन होची आई विल मूव द मैग्नेट एट ए फास्टर रेट अधिक स्पीड मूव करेबी देन इट विल टेक 8 सेकेंड टाइम तो सेकेंड केस रे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स केते आसीबो ना B2 माइनस B1 इंटू A डिवाइडेड बाय 8 नाउ कंपेयर these two quantities we have two fractions and both the fractions have the same numerator ठीक है the numerator is same but in the second fraction the denominator is less ता माने this value is greater than this value तो हम ये कौन देखले जदि हम मैग्नेट को रैपिडली मूव करेबा बा फास्ट मूव करेबा बा अधिक स्पीड रे मूव करेबा देन कोन हबो कम टाइम रे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हबो किंतु जदि हम मैग्नेट को स्लोली मूव करेबा अधिक टाइम रे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हबो ता माने रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कमी जीवो जदि मो मैग्नेट को स्लोली मूव करूची काहे कि टाइम बढ़ी जीवो दि टाइम बढ़ी जीवो देन रेट कमी जीवो ता माने मैग्नेट को स्लो मूव करेले टाइम बढ़ी जाउची टाइम बढ़िले रेट कमी जाउची सो आमे कम अमाउंट रो करंट पाउची बा कम अमाउंट रो वोल्टेज पाउची दैट्स व्हाई
the deflection is less. किंतु जदि मु कौन करी ना मैग्नेट को बहुत फास्ट मूव करी, रैपिडली मूव करी, अधिक हाई स्पीड रे मूव करी, देन कौन हम लेस टाइम रे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, टाइम कमी जीवो, दि टाइम कमी जीवो देन रेट बढ़ी जीवो, दि रेट बढ़िबो ताले कौन हम इंड्यूस्ड करंट रो वैल्यू बा इंड्यूस्ड ईएमएफ रो वैल्यू बढ़ी जीवो. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, induced EMF and induced current depends on the rate of change of magnetic flux. So Faraday explain करि पारले जे जत्ते आमे मैग्नेट को मूव करूचे देन कोन पाई आमे करंट पाउचे. तो से कोन कहले ना द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पांसिबल फॉर induced EMF. किंतु induced EMF टा लार्ज हबो कि स्मॉल हबो दैट विल डिपेंड ऑन दिस रेट. ठीक अछि. सो फाराडे जेतिकी एक्सपेरिमेंट करथिले बा जेतिकी से ऑब्जर्व करथिले आउट ऑफ द ऑब्जर्वेशन से एक्सप्लेन करि पारले जे जत्ते बेले गोटे मैग्नेट को मूव करोचे टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, व्हाई आर वी गेटिंग डिफ्लेक्शन. एंड द सेकंड वन इज व्हाई द डिफ्लेक्शन इज मोर if the magnet is moved faster, and why the deflection is small if the magnet is moved slower. Kintu Faraday could not explain the reason behind the change in the direction of the current, but change in the direction of the deflection. जैसे हमें नॉर्थ पोल को मूव करो towards the coil, the galvanometer deflects towards right, and when the north pole is taken away from the coil, the galvanometer deflects towards left. This change in direction, why it happens? कौन पाई direction change होची? This phenomena could not be explained by Faraday. Faraday ए ऑब्जर्वेशन को से एक्सप्लेन करि पाले नाही. से खाली या कहिले जदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हबो आमे गोटे इंड्यूस्ड ईएमएफ बा गोटे इंड्यूस्ड करंट पाइबा. अब से इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट रो मैग्नीट्यूड तार वैल्यू डिपेंड करिबो कहा परे ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. किंतु कोन पाई डायरेक्शन चेंज होची ए जिंसटा फाराडे कहि पले नाही. सो दिस phenomena was explained by another scientist known as Lenz. So next class में पढ़िबा about Lenz law, and we'll discuss that why is there a change in the deflection direction of the galvanometer. So that's all for today's class. तो आज में कौन पढ़ले जे हम पढ़ले जे we can get electric current by using the magnetic field, which is the theme of this topic, electromagnetic induction. And then we discuss about the Faraday experiment, these observations. Then we discuss about the magnetic flux, and we know that we discussed that the change in magnetic flux is responsible for the induced EMF, and this rate of change of magnetic flux is equal to what? The magnitude of induced EMF or induced current. Okay, so next class में discuss करिबा about Lenz law, and हमें जानिबा जे कौन पाई इलेक्ट्रिक करंट रो डायरेक्शन चेंज होची if we are moving the north pole towards and away from the coil. So hopefully आज में जहाँ पढ़िले you have understood every concept. If so, then please hit the like button, and if you are new to my channel, then please subscribe to it and press the bell icon to get all the future notifications, and share this video among your friends so that everyone will be benefited. And again, thanks a lot for watching this one.